स्वागताला आज ते गायले, स्वागताला आज ते गायले, स्वागताला आज ते गायले. पाहुणी या इथे गुरुजनांना, पाहुणी या इथे गुरुजनांना, गुंफितो आम्ही या सुमनांना, गुंफितो आम्ही या सुमनांना. अभी माननीय ऑनरेबल सीएम ने ये बहुत ही अच्छा कदम उठाया है कि हमारे छात्र जो हैं वो पढ़ाई करते हैं और हर एक का इंटेंशन या उद्देश्य केवल शायद एक ही रहता है कि किस तरह से हमें सरकारी नौकरी मिले. लेकिन मुझे ऐसा लगा शुरू में जब ये इंट्रोड्यूस किया था हमारे लिए प्रोग्राम, तो वैसे मुझे थोड़ा सा तनाव आया था कि किस तरह से हम लोग, जो कि हमारा 8-10 बजे कॉलेज शुरू होता है, और कैसे हम अपने शेड्यूल में इसको बिठाएंगे. लेकिन सबसे अच्छी बात है कि सीएम ने पहले से ही हमारे लिए एक सुविधा प्रदान की है कि किसी भी स्कूल को डिस्टर्ब न करें, कि जिसके कारण आज हम स्कूल छूटने के बाद 2 बजे से 5 बजे तक 5 दिनों के लिए ये कार्यशाला जारी रहेगी. मुझे लगता है कि हमारे सीएम का विद्यार्थियों को लेकर के शिक्षा के प्रति एक दूर दृष्टिकोण है और एक सचेत दृष्टिकोण से वे ये सोच रहे होंगे कि हर एक को नौकरी मिलना तो आसान नहीं है, तो कम से कम खुद का व्यवसाय वो क्यों न करें. तो इसीलिए उन्होंने इस तरह की कार्यशाला का आयोजन किया है, जहाँ पर कि आप लोग काफ़ी मतलब मार्गदर्शन लेकर के खुद कोई प्रोड्यूसर बन सकता है, कोई डायरेक्टर बन सकता है, कोई स्टोरी राइटर बन सकता है, यहाँ तक कि जिनके प्रति हमें बहुत ही आकर्षण है ऐसे एक्टर या कोई एक्ट्रेस भी बन सकता है. क्योंकि आजकल हमारे जो चैनल्स हैं वो अनगिनत बढ़ रहे हैं, जहाँ पर कि हम लोग देख रहे हैं कि एक ही सीरियल में काम करने वाले जो पहले हमें मिलते थे वैसे कलाकार आज नहीं रहते हैं. बार बार जैसे कि उनका रिपीटेशन नहीं होता है, बल्कि अलग अलग नए चेहरे देखने के लिए मिलते हैं. सबसे अच्छी बात है कि कोई भी चित्रपट सृष्टि में जो भी कोई गोवा का अगर अपना हुनर दिखाना चाहता था तो उसे बॉम्बे में जाना पड़ता था. लेकिन आजकल ऐसी सुविधाएं यहाँ पर मौजूद है कि जहाँ पर कि यूट्यूब पर आप स्वतंत्र रूप से अपनी कोशिश कर सकते हैं, एक्टिंग को लेकर के या इंटरव्यू को लेकर के. अभी मुझे लगता है कि इस कार्यशाला में जो पार्टिसिपेशन जो भी करेगा उसके लिए केवल उसके मतलब वर्तमान काल के लिए ही उसका फायदा नहीं होगा, बल्कि ये फायदा उसे आगे बढ़कर भी उसके पूरे जीवन काल के लिए रहेगा. क्योंकि एक प्रोड्यूसर बनने के लिए या डायरेक्टर बनने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि कहीं पर हमें कोई उम्र की मर्यादा नहीं होती है. जैसे कि हम सरकारी नौकरी करते हैं वहाँ पर हमें उम्र की मर्यादा होती है कहीं पर भी, तो यहाँ कोई उम्र की मर्यादा नहीं है, जहाँ पर कि आप काफ़ी समय तक, जहाँ तक आप लोगों की उम्मीद है उस हद तक जाते जाते आप लोग अपने प्रोड्यूसर या डायरेक्टर बनने की कोशिश को पूरी कर सकते हैं. अभी जैसे कि मैं ऑनरेबल सीएम से इसी कार्यशाला के माध्यम से एक सुझाव देना चाहती हूँ कि वैसे हमारे अभी अराउंड 623 स्टूडेंट्स एनरोल हो चुके हैं, और शुरू में जब हमने ये अनाउंसमेंट किया था तो उस समय हमें लग रहा था कि शायद दोपहर का समय है, इसीलिए आराम करने वाले वगैरह घर में जाना पसंद करेंगे. लेकिन देखते हैं तो एनरोलमेंट इतना बढ़ गया कि हमें उन्हें रेफ्यूज़ करना पड़ा. तो मुझे लगता है कि बाकी जो हमारे स्टूडेंट्स हैं या विद्यार्थी हैं, सच में जिनको इनमें भाग लेने की उर्मी है या जो चाहते हैं, तो सीएम को चाहिए कि वो और ऐसे वर्कशॉप बार बार करें, और ख़ास तौर पे वैकेशन में भी बच्चों को किसी अकादमी में ले करके या हमसे कांटेक्ट करके हम उनको नाम भेजते हैं कि जो भी कोई इसमें भाग लेना चाहता है. खूब वर्ष पयलीं आमी पळयताले आनी अशें आधुनीक आमच्या आजोपान आसा की गोंयचे कितलेशे बरे कलाकार आमी दुसऱ्या राज्यांत गेले. कित्याक तर आमचे कडेन ती सुविधा तेन्ना नाशिल्ली.
आनी म्हणून बरी कला आसुनूय बी आमचे मनीस गोंयचे मनीस हांकां भायर वचचें पडटालें. कित्याक तर ताका जायशें पुरक शिक्षण आनी ताचो उपेग करप ताचीच ती साधनां आशिल्ली ती गोंयांत उपलब्ध नाशिल्ली. आज तुमी खरेंच भाग्यवान आसा. कित्याक तर ही अशी एक नव्या प्रकारची कार्यशाळा जी तुमकां तुमच्या सगळ्या उच्च माध्यमीक विद्यालयांत ही सोय तुमकां उपलब्ध करून दिल्ली आसा. आनी ती आमचे सरकार आनी आमचे गोंयचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या मुखेलपणा खाला जाल्ली आसा. आतां हाचो उपेग कसो करप? तुमचे कडेन कला आसता. आतां कला ही कशी तुमी वेगवेगळ्या तरेन दाखयतले. बरोवपाची कला आसता, थोड्याक एक्टींग करपाची, नाटकान पार्ट करपाचो, मोनोलॉग करपाचो ही कला आसता, थोड्याक पदां म्हणपाची कला आसता. हे सगळें तुमी एकठांय हाडचें पडटा. आनी हे एकठांय हाडटना एक मनीस जाका एखाद्यो सगळ्यो कला आसता तो सामको बरोवपी ते डायरेक्टर, फिल्म डायरेक्टर हाजे मेरेन पावपाक शकता. आनी हे तुमी जर ही कार्यशाळा बरे तरेन आतां तातूंत भाग घेवन तातूंत समरस जावन तुमी ती जर पुराय केली जाल्यार ताजो तुमकां नक्कीच फायदो जाता. ही कितें हें वेगळें न्ही, हें नवें शैक्षणीक धोरणाचोच एक भाग आसा. नवें शैक्षणीक धोरण म्हणटा तुमी फक्त शिकात, डिग्री घेयात आनी सरकारा कडेन नोकरी मागू नाका. तुमी तुमच्या पांयार उबे रावपाचे, एंटरप्रिनर जावपाची तयारी दवरा. आतां एंटरप्रिनर हाजो अर्थ कितें जाता? जो सायन्साचो मनीस आसा, जो इलेक्ट्रॉनीक शिकता, जो केमिस्ट्री शिकता, जो आपली इंडस्ट्री ओन काडूं शकता, तोय बी एंटरप्रिनर. मागीर एक आर्ट्साचो भुरगो म्हणटलो हांव लेखक, हांव कसो एंटरप्रिनर जातलो? हांव बरो बरोवपी, हांव एक्टर, हांव बरें नाटकान काम करूं शकता, हांव कसो एंटरप्रिनर जातलो? पूण हाचेर तुमी विचार करा. आनी हाचेर जर तुमी विचार केलो जाल्यार तुमच्या भितरली कला जी बरोवपाची बरी आसा ती खंय मेरेन पावंक शकता हें तुमकां ह्या इन गोवा अकाडमीच्या वतीन, तांच्या पालवाच्या वतीन ही तुमकां स्वताक आपणावपाक जाता. आनी तुमी एक बरे एंटरप्रिनर जावन तुमी दुसऱ्याक ती कला, दुसऱ्याची कला तुमी वयर काडपाक शकता. रोखडेच दिता हांव तुमचे पयशे साहेब. तुम्ही जाणात न्ही, रम्या आनी रोमाचो पप्पा हाल्ली संवसारान उरतले साहेब. आनी तांकां दोगांयको हांवूच पळयता. तुमच्या स्कुलाची फी सुद्दां दिवपाची ना साहेब. म्हाका थोडोच वेळ दिया साहेब. हांव रोखडेच पयशे दितले, थोडोच वेळ दिया. अरे यो बस मरे कित्याक रे टेन्शनान दिसता मरे खूब तूं. अरे काय ना रे ते घरा मातशें आशिल्लें तें सोड. अरे सॅम तुवें नवो आयफोन घेतलो गो? हय रे ती हांव ऑनलायन गेम खेळटा पळय, तितून म्हाका 1 लाखाचो प्रॉफीट जालो. हें खरेंच? हय रे, तुकाय पयशे जोडपाक जाय जाल्यार तुवें ऑनलायन गेम खेळटी. हां सांग रे. हॅलो सॅम, अरे मातशें याद पड पयशे दी मरे. हें ना, तुका पयलीं टायम खूब पयशे येयला, परत परत मागपाक गेलो अशें दिसता. सॅम शुगर प्रॉफीट जातलो पळय, म्हाका प्लीज दी न्हू. हें हांवें मम्माली आसली नासली तितली भांगरां विकून तेय बी पयशे बुडयले. आतां मम्माक कितें म्हणून जावन दाखयतलो? आतां हेजे एकूच उपाय.
जीव दिलो म्हणून काणी थंयच सोंपना. मनीस वता पूण ताज्यो यादी आनी कामां थंयच उरता. जीवनभर जो त्रास भोगलो, जीव दितकीर तोच त्रास घरातल्यांक भोगचो पडटा. ताज्याच खातीर घडटा दाव आयुश्याचो. बापरे, हे असं आयुष्यात केन्ना सुल्लो जाणूच लायक जाली. म्हटल्यार आसा बाय म्हणून काय कितें म्हणूया, कितें जाता म्हाजी कितें वयता बाय म्हणपाक तरी. बाय काय आन्सरूच ना. कितें बिगडलां देव जाणा. हांवें घरा वचून की न्हिदता तरी, शिक्षण तरी करुया.
वर्कशॉप हाडलेलो आनी तो वर्कशॉप खूब बरो केलो. लायक मज्जा येयली आमकां 5 डेजचो असलो तो वर्कशॉप. त्या वर्कशॉपाक आमकां खूब कितें शिकपाक गावलें. लायक आमकां खूब कितें नवें लायक कशें एडिटींग करप हें करप लायक कॅमेरा कसो धरप. पयलीं आमी सगळें अशें फर्स्ट अशें फ्रंट दवरून करतालीं शूट. मागीर आमकां वांकडो धरपाक शिकयलो कसो स्ट्रेट कशें धरप तें सगळें शिकयलें. आनी म्हाका हो वर्कशॉप खूब आवडलो आनी म्हाका म्हाज्या भितरलो पोटेन्शियल कळ्ळो की कशें शूट करप. पयलीं हांव इंट्रस्टेड इतलें नासलेलें बट आतां म्हाका अशें दिसलें की हांव फर्स्ट टायम ट्राय करया अशें. सो मागीर हांव ट्राय केलें मागीर म्हाका आवडलें न्हू बरें अशें दिसलें. आतां हांव चिंतलें की हांव आनी कितें करपाक शकता हितूर आनी हो करियर म्हाका असो बरो असो दिसलो. ना हांव पयलीं भरपूर अशें कॉम्पिटिशनाक बी पार्ट घेतालें जितून म्हाका अशें पप्पा स्क्रिप्ट बरोवन दितालो. पूण आतां जेन्ना हांव ह्या वर्कशॉपान आयलें तेन्ना आमची जी फिल्म आसा तिजी स्क्रिप्ट हांवें बरयली. तेन्ना म्हाका म्हाज्या भितरलो पोटेन्शियल कळ्ळो की हांव कितली बरी स्क्रिप्ट बरोवंक शकता जी म्हाका खरीच आवडली म्हाजी स्क्रिप्ट. तर अशें खुबशे जाणांक अशें कॉन्फिडन्स आयला आसतलो की आपूण एक्टींग करपाक शकता, आपूण कॅमेरामॅन बरो जावंक शकता, आपूण एडिटींग बरी करता आनी कितें चुकी आसा तें आमी फुडें सुदारता. तशेंच आमच्या हायर सेकंडरीक थँक्यू म्हणपाक सोदता की इतलो बरो वर्कशॉप घडोवन हाडलो आनी अशेंच आमी भरपूर अशे वर्कशॉप घडोवन हाडया आनी आमच्या BSआचें नांव बरें जालें. The organizers and every member of the committee for giving us this wonderful opportunity to be a part of this filmmaking workshop. These 5 days have been truly an eye-opening experience for me. I was able to overcome my fear of working with a group, and also I realized just how challenging it can get to complete the short film within limited time and resources. A special thanks to Varad and Sai Prasad for carrying out most of the heavy lifting in production, and we are truly grateful to our mentors, trainers, and their valuable guidance, creative ideas, and constant encouragement, which helps us learn, grow, and in short time. First and foremost, I will be very much thankful and grateful to our principal madam who gave a big opportunity for us to learn a film workshop, and also very much thank you to our CM to give an opportunity to learn and to know about how the scripts are done, how the films are being created. First and foremost, I was also curious like how the scripts are being done, how this movie clips and etc. कशें कितें करता. ओ माय गॉड कशें कितें करता. म्हाकाय म्हणजे चळवळ आशिल्ली पण ही जी ऑपॉर्च्युनिटी जी दिला आमकां अनिल सरान जो आमकां खूब हेल्प केलो लायक कशें कॅमेरा होल्ड करपाचें, कसले इफेक्ट म्हणजे आतां म्हाका तो खबर नाशिल्लें की फिल्मान इफेक्ट यूज करता आनी करना ते कित्याक लागून तें आमकां आतां कळ्ळें. आनी आय एम ऑल्सो आमी क्रिएट करता रिल्स बीन पूण फिल्म केन्ना क्रिएट करूं नाशिल्ली. पण आतां आमकां ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी आनी कळ्ळें की कशें फिल्म बीन करता. फिल्म आमकां दिली एक चान्स दिलो आमकां की लायक डॉक्टर आनी इंजिनियरूच आमकां सगळें ना, सगळीं हेच्या भायर नीट आनी जी पूण आमकां चान्स मेळ्ळो की आमची फिल्मान सुद्दां येवं शकता. एक गोष्ट म्हाका खरी बरी आवडली की तुमी आज जे पळय ज्वलन प्रश्न आसा ते घेतले. स्क्रिप्ट कित्याची बरयली तुमी, ड्रग एब्युजाचेर बरयली, क्लिनलीनेस आनी पोल्युशनाचेर बरयली, वेस्टेज हाजेर बरयली, रॅगिंगाचेर बरयली. आनी हातूंतल्यान एक म्हाका अशें दिसलें की तुमकां आज समाजान कितें घडटा हाची जाणीव आसा आनी ही जाणीव आसप खूब म्हत्वाचें. कारण आमचो तर देश पळयता, आमचें राज्य पळयता आनी आमी स्कुलांनी आनी कॉलेजांनी जें कितें चल्लां तें पळयशात जाल्यार ह्यो सगळ्यो गोश्टी येतात. तुमी एक 15, 16, 17 वर्साचे भुरगे आनी ह्या सगळ्या जाणीवेंतल्यान तुमी फुडें वता. आज एनवायरमेंट इज अ बीग प्रॉब्लम. कित्या खातीर? कित्याक काय म्हणून आमी प्लास्टीक वापरता आनी तें काडून खंय उडयता आनी हें मागीर प्लास्टीक ड्रेनांनी वता, वॉटर बॉडीसांनी वता आनी पोल्युशन क्रिएट करता. आनी खंय हें प्लास्टीक उडयल्ल्यान एनवायरमेंटाकूय त्रास जाता. कित्याक प्लास्टीक आयचें जें आसा तें इज नॉट डिग्रेडेबल. गायो जावं म्हशी जावं बाकीची जनावरां हें खाता आनी तांकां त्रास जाता, ती मरता. भुरग्यांनी आज ड्रग घेवचे न्ही किंवा खेळचे न्ही, कॅसिनोनी वचचे न्ही, गेमींग करचे न्ही. हें कित्या खातीर करप आसता की एक बरो भुरगो, शिकिल्लो भुरगो आसत जाल्यार आपलें बरें लायफ जर काडटलो जाल्यार हे सगळ्या जी पळय वायट व्यसनां आसा ताच्या पासून पयस रावपाक जाय आसता.
आणि आज तर जशें मॅडमीन म्हणलें आज तर फुडें तुमी तर प्रोफेशन म्हणून घेत जाल्यार फिल्म मेकींग, मिडिया, डॉक्युमेंटरी मेकींग, एक्टींग, स्क्रिप्ट रायटींग, डायरेक्टींग हे खूब बरी केलें आसा. तुमी आज गोंयच घेया, गोंयांतूच आतां कितलींशींच न्यूज चॅनलां आसात. एक म्हजें जेन्ना ल्हानपण आशिल्लें किंवा हांव जो म्हणसर SSC 12वी जाल्लो तो म्हणसर एक दूरदर्शनच आसतालें आनी एकूच कोंकणींतल्यान निमाणी बातमी येताली. बाकी सगळे वेळ सगळे हिंदींतल्यान किंवा मराठींतल्यान प्रोग्राम येताले जे दिल्लीच्यान येताले किंवा महाराष्ट्रांतल्यान मुंबयच्यान येताले. आज तुमकां गोंयांत पळय कितलीं चॅनलां आसात. इंडियाभर पळोवपाक जाल्यार मराठी चॅनलां आसा, हिंदी चॅनलां आसा, इंग्लीश चॅनलां आसा आनी तुमी जर बाकीच्या रिजनल लँग्वेजींनी गेली जाल्यार थंय तामीळ, कन्नड, तेलुगू सगळ्यो जितल्यो भारतांत आज भाशा आसा तितल्याय भाशां खातीर आज वेगळे वेगळे तरेचे मनोरंजन कार्यक्रम एंटरटेनमेंट ह्या चॅनलाच्या थ्रू जाता. फिल्माचे जर म्हणशी जाल्यार इंडिया इज वन ऑफ द लार्जस्ट प्रोड्युसर. आफ्टर हॉलिवूड इज बॉलिवूड अशें म्हणटात. आनी तुमी जर ह्या दिसांनी पळयलाच आसतलें सय्यारा फिल्म रिलीज जालें 2 युवकाची काहाणी. एकाच दिसा पयल्याच दिसा 55 कोटी तिचे अजून एक म्हयनो जावना 350-400 कोटीचो टर्न ओवर जाला. 2 दिसा फाटल्यान वॉर 2 हे सिनेमा रिलीज जाल्ले पयल्याच दिसा 55 कोटीचो तांच्यांनी टर्न ओवर केलो. हें हांव तुमकां कित्याक सांगता अशें मॅडमीन म्हणलें आमचो 140 कोटीचो देश. गोंयांतली तर स्थिती पळयची जाल्यार आमी 15-16 लाख पॉप्युलेशन. ह्या सगळे आतां सरकार नोकरी दिवंक पावचना. तुमी तुमच्या कॅपेसिटीचेर जॉब क्रिएटर जावचे पडटा. जॉब सिकर जावप ना, जॉब क्रिएटर जावप आनी तुमी दुसऱ्यांक जॉब दिवचे पडटा. आनी अशें जर करतलो जाल्यार म्हाका दिसता हे तरेचे वर्कशॉप खूब इम्पॉर्टंट. 5 दीस 5 त्रीक 15 वरां किंवा 20 वरां ह्या 15-20 वरांनी तर तुमी अशी रान तरेची फिल्मां हें करूंक शकता. तुमी तर खरेंच विचार केला आनी ठरयलें 40तले 5 किंवा 10 भुरग्यांचो जर ठरयत न्ही की आपूण आपलें करियर मिडियान करतलो, फिल्मान करतलो, रायटिंगान करतलो, प्रिंट न्ही जाल्यार जर्नलिजम इन मिडिया करतलो जाल्यार म्हाका दिसता असल्या वर्कशॉपाचें दीस वील बी अ सक्सेस.